हेलो स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा मेजर कंसर्न इस टॉपिक का क्या है, कहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये सिलेबस है जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं डिफरेंट ऑर्डर के लिए। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो थोड़ा सा नया हो सकता है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर का ही एप्लीकेशन होती हैं, लाइक रिवर्स, पैरेलल, कॉन्जिक्यूटिव एंड चेन रिएक्शंस। अब इनको स्टडी करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बोलते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशंस। रिवर्स रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें चाहिए स्टॉप फ्लो मेथड्स, रिलैक्सेशन मेथड्स। इसके साथ साथ ब्रांचिंग रिएक्शन की स्टडी करने के लिए भी हमें, चेन रिएक्शन की स्टडी करने के लिए भी हमें स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन चाहिए। ब्रांचिंग रिएक्शन के बारे में भी हमें चाहिए। साथ साथ डिस्कस करना है हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, रेट कांस्टेंट पर कैसे इंपैक्ट करता है, और डिफरेंट थ्योरी जो केमिकल काइनेटिक्स में रेट और रेट इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो इस टॉपिक का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो है पैरेलल रिएक्शन। वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रिपीट हुआ है कई बार और होना चाहिए करंट ईयर्स में भी। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपके लिए पीवाईक्यूज में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। ड्राइव द रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। For two parallel first order reaction, derive the equation for the concentration of A, B and C as the function of time and represent them graphically. ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, कैसे इनको लिखना है। साथ साथ दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हैं जिस तरह की एग्जाम में पूछी जाती हैं। काफी अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो हम एट द एंड ऑफ सेशन डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन। अब पैरेलल रिएक्शन के कुछ और नेम भी हैं, जैसे पैरेलल रिएक्शन, साइड, कॉन्करेंट या कंपीटिंग रिएक्शन। अब एक जनरल रिएक्शन अगर मैं ले रहा हूं जिसमें ए रिएक्टेंट है विच गिव्स बी एंड सी एज द प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट, देन this reaction cannot be a parallel reaction as both the reactants are obtained with same rate and in same amount. So parallel reaction means we are getting different products in different yield and in with a different rate. For an example, if we are talking about organic chemistry, these sort of reactions are called regioselective reactions. For an example, we know that in Reimer-Tiemann we get two different products. See, phenol की reaction chloroform से, in basic environment we will get two ortho and para products, while ortho form as major while para obtain as minor. Similarly, if you are taking an example of elimination reaction, simple beta elimination reaction, in this reaction you will get two products, but 2-ene, but 1-ene, but as per Sedgwick prediction this one obtain as major product. So these reactions, we can say that these are the parallel reactions in which two products are obtained in different proportions. In organic, we set them as a regioselective reactions. So अपना आंसर राइटिंग करते वक्त अगर हम छोटा सा स्पेसिफाइड कर दें एग्जांपल के साथ,
पैरेलल रिएक्शन को, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। अब रेट लॉ ऑब्टेन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। At the start of reaction, we assume the concentration of reactant as A naught. P और C का अमाउंट, P और C का अमाउंट इनिशियली क्या होगा, 0 एंड 0. आफ्टर T टाइम, आफ्टर सम टाइम, सपोज X मोल ऑफ A रिएक्ट, जब X मोल ऑफ A रिएक्ट करेंगे तो B का में मान लेते हैं Y मोल मिल रहा है, C का में Z मोल मिल रहा है, which means X will be equal to Y plus Z. Now see, for parallel reaction, A decompose to give B and C. So decomposition of A will give B and C. So rate of decomposition of A will be equal to the rate of formation of B plus rate of formation of C. Okay. Now see, B is obtained from A with the rate constant K1. So if we write the rate equation, dB by dt is equal to K1 A to the power 1, where A naught minus X को we consider as A. Similarly, C obtained from A with the rate constant K2. So we can write dC by dt is equal to K2 into A to the power 1. Now, A को कॉमन ले लेता हूं. अब इक्वेशन को इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इजीली, K1 प्लस K2 को मैं क्या मान लेता हूं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट. कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है. कैन राइट हियर K ओवरऑल इनटू A. अब आप देखिए, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है. क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे. लिमिट डिसाइड करते हैं. लिमिट क्या होंगी, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या थी, ए नॉट, आफ्टर सम टाइम ए, या एटी भी लिख सकते हैं. एटी लिख लेते हैं, मोस्ट कॉमनली वी यूज एटी. एंड ए नॉट कब थी कॉन्सेंट्रेशन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एंड आफ्टर टाइम टी it become 80. So we know that the integration of dx by x is given as ln x and integration of dx will be x. Whenever you use some mathematical formulas, it's good to write in the corners. Now put the limits, upper limit minus lower limit. See, now t is equal to 1 upon k overall. It can be written as, sorry, I forgot to take a minus sign here. So we can write ln a naught minus at, can write as ln a naught upon at. We know that in ln, m minus n means ln m upon n. So it's quite similar with the first order reaction.
Let us assume this as equation 1. Now see, this equation can also written as a naught upon 80 or a naught upon a naught minus x. This is the important result which help us in solving some problems. Now again, अगर मैं इक्वेशन 1 से चलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिलने वाला है? नेगेटिव साइन को अंदर ले लेता हूं। ये वही नेगेटिव साइन है जो मैं भूल गया था, आप मत भूलिएगा। ठीक, इस इक्वेशन को बेसिकली मैं 80 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? ln 80 क्या हो गया मेरा? ln a नॉट माइनस के ओवरऑल इंटू जी। इस इक्वेशन से अगर मैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर दूंगा, वी कैन प्लॉट अ कर्व फॉर ln 80 versus t, in which we can see that the slope of line will be negative of k overall and intercept will be ln a naught. Now further इक्वेशन 1 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ln 80 माइनस ln a naught इज इक्वल टू के ओवरऑल इंटू टी। नेगेटिव साइन से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। कैन राइट ln 80 बाई a naught इज इक्वल टू एंटीलॉग लेकर के वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज so this is the concentration of reactant remain after time t. Important result है। This suggests the concentration of reactant decrease exponentially with respect to time. Let us say equation 2. Now हमसे पूछा गया है concentration of B, concentration of C। एक का तो निकाल लिया, B और C भी पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? We know that dB by dt is equal to K1A. In place of A we can write A naught to the power minus K1 plus K2 into T. Now dB is equal to K1 A naught e to the power माइनस, इसको मैं K ओवरऑल लिख देता हूं, इनटू dt। फिर से हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0 and after t time we assumed as y. So integration of dB is further taken as B. Now this is an important integration. Integration of e to the power minus x will be e to the power minus x upon the minus 1 value, which is the differential of x. So here we can write as e to the power minus k overall into t
divided by minus K overall. Remember the limits. Now put the limits. Negative sign बाहर आ गया है. In place of K overall, we can write K1 plus K2 and apply the limits. E to the power 0 is considered as 1. इक्वेशन को सुंदर सा देखने के लिए माइनस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, so that we can write in this way, as well as K overall की जगह K1 plus K2 put कर दिया. Can see that we will get the value of y here. This is the important result for the exam purpose. Now in a similar way, we know that dc by dt is equal to K2a. In place of a, further we need to put K2 a naught e to the power minus K overall into t. Integrate करेंगे using the limits. We will get z is equal to K2 a naught K1 plus K2 इसकी वैल्यू निकालने के लिए एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप एक स्टेप करके लिमिट लगाकर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. तो सारे स्टेप्स हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं. So the value of z, another important result for the numerical point of view. So we get the value of x, y and z. Correct? Now what if we ask the half-life? We know that k is equal to K1 plus K2. So overall half-life will be ln2 by t half for the first order reaction. Similarly, this is the t half of first reaction A to B. This is the t half of second reaction A to C. ln2 कट जाएगा. We can say that overall t half can be given in this manner. This is also an important result for the numerical purpose. Now sometime fraction of product can also be asked. So these are the value of yz. If we dividing these two value, y upon z, what we get? We get K1 upon K2. जब मैं डिवाइड करता हूं दोनों को सब कट जाएगा. जितना बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा है सब कट जाएगा. छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा K1 by K2. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई वाई जेड का जो रेशो है वो उनके रेट कांस्टेंट के रेशो के बराबर होगा. यानी जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका यील्ड भी ज्यादा होगा. नाउ सी, अगर मुझे फ्रैक्शन ऑफ वाई निकालना हो, सो फ्रैक्शन ऑफ वाई मींस वाई अपॉन वाई प्लस जेड. कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो लगा देते हैं. सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ जेड निकालना हो, वी कैन राइट K2 अपॉन K1 प्लस K2. परसेंटेज निकालना हो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट द परसेंटेज. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस लेक्चर. व्हाट if we ask to correlate the activation energy of different steps? A से B का एक्टिवेशन एनर्जी हमने कंसीडर किया E1, A से C का एक्टिवेशन एनर्जी हमने कंसीडर किया E2. अगेन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल रेट कांस्टेंट. K overall is equal to K1 plus K2. Now apply the Arrhenius equation.
हमने इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट के लिए आरएमएस इक्वेशन को लिखा. नाउ डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात जानना होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है? -1 e to the power -x. So differentiating with respect to temperature T. मुश्किल से दिखने वाला ये स्टेप बहुत आसान सा रिजल्ट लास्ट में देगा. डिफरेंशिएट किया मैंने, क्या आएगा? e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी डिवाइड बाई 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस के 1/t². माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सिमिलरली 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस के 1/t². और माइनस जो e टू द पावर माइनस एक्स से -1 आया है वो दोनों माइनस करके प्लस बना लेंगे. ना RT² से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में. आप देखिए ये क्या हो जाएगा? के ओवरऑल इंटू ई ए RT² से मल्टीप्लाई कर चुके हैं. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? K1. ये क्या हो जाएगा? K2. C. Very small and very useful result as far as exam is concerned. Direct numerical can be asked from this formula. You can see this is the expression for the overall activation energy for a concurrent, competing or a parallel reaction. We already calculate the concentration of A, B and C at any time t. See, this is the simplest way to write the answer for the parallel reaction. But अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना हो, मेरे पास टाइम है और मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूं, कुछ डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूं, तो मैं एक्सप्रेशन को, डेरिवेशन को थोड़ा सा मुश्किल भी बना सकता हूं, थोड़ा डिफरेंट भी बना सकता हूं. मुश्किल से बेटर होगा डिफरेंट कहना. और स्टोशियोमेट्री को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा करके, स्टोशियोमेट्री को चेंज करके पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. नाउ मैंने कंसिडर किया देयर इज m मोल ऑफ B फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड n मोल ऑफ C. नाउ सिंपल सी स्टोशियोमेट्री लगानी है, कुछ नहीं है. देखने में लगता है कि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है पर बहुत आसान प्रॉब्लम है. सी, m मोल्स ऑफ B हमें मिल रहे हैं किससे? 1 मोल ऑफ A से. और हम क्या अज्यूम करेंगे? y मोल ऑफ B हमने ऊपर अज्यूम किया था, z मोल ऑफ C बन रहे हैं एट एनी टाइम t पर जब x मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं. इस द कंडीशन एट एनी टाइम t. So m moles of B is obtained from 1 mole. So y moles of B is obtained from, simple unitary method लगा दिया. In a similar manner, Z mole of B is obtained from Z by n mole of A. Now the value of x will be y by m plus z by. इस कंसेप्ट से आपको एक अलग तरीके से, एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ
कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, या इस पर अगर कोई ट्रिकी प्रॉब्लम और आई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और आई, तो उसको मैं कैसे डील कर सकता हूं। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, सी ब्रैकेट से बाहर ही रहेंगे डिफरेंशियल से। नाउ see, this is the equation which we need for the further calculation. dx by dt को क्या हम माइनस के da by dt नहीं लिख सकते? Similarly, in place of d by dt, you can write this dz by dt represent the formation of c, so we can write the c by dt. हमारी सिंपल इक्वेशन आ चुकी है अब, जो हमने सॉल्व की थी। को सॉल्व करेंगे तो मैं सिमिलर रिजल्ट्स लिख देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आएगी तो क्या आएगी? अब वी गेट m इंटू k1 प्लस k2। Similarly, value of z n into k2। अगर मैं रेशियो लेता हूं y by z, what we get m k1 n k2। ये हमारा मैक्सिमम कंसेप्ट हो गया जहां से प्रॉब्लम आ सकता है स्टोशियोमेट्री को चेंज करके। केवल वैल्यू ऑफ k1 की जगह m k1 और k2 की जगह n k2 हो गया है। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं किस तरह की एग्जाम में पूछी गई हैं। सी प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। ए से 2b और ए से 3c बना है, जस्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया उसका रेप्लिका। v बाई सी का रेशो कितना दिया हुआ है? 8। सो इन प्लेस ऑफ v बाई सी वी कैन राइट 2k1 upon 3k2, as we know that the ratio of y by z will be mk1 upon nk2। so k2 कितना हो गया? 1 by 12 into k1, and we know the value of k1 here. Now see, this is the second question in which the value of c upon a is asked. Question is quite different. जनरली वो प्रोडक्ट का रेशो पूछता है, यहां पर एक प्रोडक्ट है और एक रिएक्टेंट का रेशो है आफ्टर 1 hour फ्रॉम द स्टार्टिंग। नो इशू। वैल्यू ऑफ सी क्या था? अब स्टोशियोमेट्री तो 1 1 है, तो एम और एन लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। वैल्यू क्या था? k2 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 e टू द पावर 1 माइनस e to the power minus k1 plus k2 into t. This is the value of c, and the value of a naught will be okay. A naught से a naught will be cancelled. In place of k2 we can write 1, k1 plus k2 will be 1.1। इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं e to the power minus k1 plus k2 into t से। ये हो जाएगा e to the power k1 plus k2 into t, क्या जाएगा 1। k1 plus k2 into t हो गया 1.1 into t, t बोला 1 hour। यूनिट हमारी रेट कांस्टेंट की आर में ही है, तो वी डोंट नीड टू चेंज द यूनिट्स।
e to the power 1.1 की वैल्यू भी 2.8 दी हुई है, ये हो जाएगा 1.8, 18/11 इज द रेशियो। क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई थी, रिप्रेजेंट ए बी एंड सी ग्राफिकली। सी, we know that 8 is equal to a naught e to the power minus k1 plus k2 t. We suggest the concentration of a decrease, the concentration of a decrease exponentially with time. At the same time, B and C form here we consider B as a major product. Keep in mind, B को major product consider किया है. We can get this type of graph. So this is the overall view of parallel reaction. We will discuss some more problems from Atkins and KL Kapoor like books when we discuss parallel reaction in more detail during our course. Thanks for watching this.